अलग अलग आंसर्स जो मिले हैं उसमें है कि लोगों की अलग अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ अवेयरनेस होती है। सेकंड क्या था कि आपका किसी एक मेडिटेशन के साथ अच्छा कनेक्शन होता है, किसी के साथ अच्छा नहीं होता कनेक्शन, राइट। तीसरा किसी ने क्या रीजन बताया था कि लेवल ऑफ एवोल्यूशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंसान किस लेवल पे है, उसको उस लेवल की मेडिटेशन दी जाए। जिसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसको उस हिसाब से यू कैन गिव अ मेडिटेशन। अब तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट तरीका जो ये, हाँ एक ये अच्छा था कि हर मेडिटेशन हमारे अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स को जगाती है या अलग अलग एस्पेक्ट्स को डेवलप करती है, राइट। मतलब ये है कि मेडिटेशन के पर्पसेस भी अलग अलग होते हैं, एक ही पर्पस नहीं होता मेडिटेशन का, राइट। सो दिस इज वन ऑफ थिंग। सो इफ यू स्टार्ट टू सी दिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओशो का जो स्कूल है, आई वाज लिसनिंग अबाउट इट यस्टरडे, एंड ओशो का स्कूल एक्चुअली अच्छा स्कूल है, एंड बहुत अच्छा स्कूल है एक्चुअली। एंड उसमें द मेडिटेशन जो वो करवाते हैं, दे मेक यू ब्लाइंड फोल्ड, मतलब ब्लाइंड फोल्ड आप अपने आप को कर लीजिए, अपनी आंख बंद कर लीजिए एंड डांस for 20 minutes 30 minutes, just wild dancing, full expression of yourself, wild expression, which means don't care about anybody, whatever anybody is doing, thinking it doesn't matter, not your business at all. You go free, full wild, and that's very good, by the way. I mean, it does, ये आपके सबकॉन्शियस में जो लोड पड़ रहा है उसको एकदम निकालने का बहुत ही अच्छा काम करता है एक्चुअली। इट्स रिमार्केबल टेक्निक इफ यू थिंक अबाउट इट। गो वाइल्ड एंड उसके बाद जैसे कि नाउ प्रैक्टिस चिलनेस। वाइल्ड जाने पे क्या होता है कि आपके चक्रास जो होते हैं उसमें जिस तरह के थॉट फॉर्म्स एम्बेडेड होते हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए उसके बाद स्टिलनेस बहुत सॉलिड मतलब हो पाती है। एंड आई लाइक द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दिस, की मतलब बहुत सॉलिड टेक्निक एक्चुअली है। इस तरीके से और भी बाकी जो स्कूल्स हैं, दे टीच देयर ओन टेक्निक्स जो हमको समझ में शायद नहीं भी आएंगी बहुत बार, बट अलग अलग पर्पसेस होते हैं उन सब चीजों के। जैसे कि एक है विज्ञान भैरव तंत्र। I'll repeat it again. Vigyan Bhairav Tantra. It is said that the great Shiva or the Divine Father was instructing the Divine Mother Parvati on her question कि जो है how shall we क्या बोलना चाहिए कि हम इल्यूमिनेट कैसे हों। उसकी 112 तरीके हैं, 112 ways of illumination or gaining cosmic consciousness. 112 are talked about in that. So Vigyan Bhairav Tantra, I think it's a good book to invest some time and read. I'm gonna highly recommend that. And yeah, that's that. So there are multiple reasons why there is different kinds of meditations, and their purposes are very different, of course. हर मेडिटेशन का अपना अपना पर्पस होता है, एंड आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप टेक्निक को समझेंगे, आपकी जो इज्जत है उस टेक्निक के बारे में वो काफी काफी ज्यादा हो जाएगी एक्चुअली। काफी ज्यादा हो जाएगी एक्चुअली, दैट इज ट्रू। सो यस, यू नो, ओके। एंड दिस विल आल्सो ब्रिंग ओपन माइंडेडनेस, बाय द वे। देखिए एक बहुत जरूरी चीज जो होती है स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर, वो होती है ओपन माइंडेडनेस, की आपका माइंड एक्चुअली में कितना ओपन है। अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज डूइंग माय मेडिटेशन, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, कि आई रियलाइज इन रियलाइजेशन कि द डीप पीस इन द हार्ट जो होता है ना, जो कि मतलब आपको सामने अम, कोई भी मतलब नेगेटिव सिचुएशन है या प्रॉब्लम है, वो पीस जब अनशेकेबल हो जाती है, और वो होती है एक्चुअली में, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, वो पीस इतनी अनशेकेबल हो जाती है एक टाइम के बाद कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका जो कंपैशन है वो एक्चुअली एक्टिव रहता है, जबकि आपके ऊपर सामने वाला अटैक भी कर रहा हो
या सामने वाला जो है मतलब लांछन लगा रहा हो, whatever that is, right? और इट्स वेरी एक्टिव। तो आपका जो रिस्पॉन्स आता है वो प्योर प्योर कंपैशन से आता है एक्चुअली। और ये एक तरह के बाद ना वो पीस एंकर हो जाती है हार्ट पे जाके, हार्ट हार्ट चक्र पे जाके। और आप उसे कर नहीं सकते, वो एक तरह का डेवलपमेंट होता है। लेट मी रिपीट इट अगेन। हो सकता है कि आपको चक्रास को मतलब किस तरीके से आप, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, कुछ कुछ कर करके मतलब मे बी यू कैन रीच देयर ऑल्सो। बट जहां तक मुझे आज आज तक का मतलब मुझे आइडिया हुआ है वो ये है कि वो एक तरह का डेवलपमेंट का साइन होता है कि आप एक सर्टन तक आ जाते हो तो एक एक पीस रहती है अंदर, मतलब काफी डीप पीस रहती है अंदर तक, विच आई थिंक इज एब्सोल्युटली इसेंशियल आजकल की डेट्स में। ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन की अगर लेजिटिमेटली प्रॉपर प्रैक्टिस की जाए, और ये प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज सब लोगों को लगता है कि ऑडियो फॉलो करना प्रॉपर है। हाँ वो प्रॉपर है, बट अनलेस एंड अनटिल वो एनर्जी जो मास्टर चौहा चाह रहा है कि आप जनरेट करो, अगर वो जनरेट नहीं हो रही है तो उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो रही है। फिर आप खाली फॉलो कर रहे हो पर वो एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है। देखिए मैं दो 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 अलग अलग बातें बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ। देर इज अ मेडिटेशन कॉल्ड द ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन, जो कि प्राणिक हीलिंग स्कूल में सिखाई जाती है, ठीक है। और यही इस तरह की अपनी अपनी मेडिटेशन आपकी अलग अलग स्कूल्स में भी सिखाई जाती होंगी, सो दैट्स परफेक्टली ओके। बहुत बार क्या होता है कि मेडिटेशन का पर्पस होता है एक स्पेसिफिक एनर्जी को जनरेट करना। अब मेडिटेशन और ट्विन हार्ट्स जो है उसमें हार्ट चक्र और क्राउन चक्र पे फोकस करके मेडिटेशन किया जाता है। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। बस ये है कि उसकी पावर का मुझे अंदाजा 11 साल के बाद हुआ है। मतलब आज मेरी 2 हफ्ते पहले की जो अंडरस्टैंडिंग है वर्सेस जो मेरी पहले की अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें बहुत ही बड़ा फर्क है एक्चुअली। उसमें फंडामेंटल फर्क क्या है, मैं आपको मतलब वो बताता हूँ कि मेडिटेशन ट्विन हार्ट्स ना जैसे जैसे मेडिटेशन ही इवॉल्व करता है, मतलब आपके सिस्टम में जब इवॉल्व करती है, तो वो जो आपके सिस्टम में जिस तरह की एनर्जी लेके आती है वो बहुत अलग एनर्जी होती है। और वो आके स्टे करती है फिर उससे मतलब मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता इसके बारे में, बिकॉज अभी भी रीसेंट एक्सपीरियंसेस ही हैं। बट मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो मोटिवेशन रहे वो खाली फॉलो द ऑडियो एंड फिनिश का न रह जाए, मतलब वो दैट इज नॉट राइट। इंस्टेड व्हाट इज द बेटर मोटिवेशन इज कि कैन आई टर्न द ऑडियो ऑफ एंड कैन आई ट्राई टू प्रोड्यूस दैट एनर्जी। वहां पे आप फिर लीप्स एंड बाउंड्स पार कर जाएंगे। इसके बाद अगर वो अंदर से नहीं आया कि एक एक सर्टेन लेवल के आगे जाना है इस एनर्जी के प्रोडक्शन में, तो फिर आप में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आएगा। आप आई होप मेरी बात समझ रहे हो। कोई बहुत सॉलिड फंडामेंटल चेंज चेंज नहीं आएगा, वो बस एक आप आप हैप्पी रहेंगे। बट फिर वो एक, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंस पे नहीं आ पाएगा। मेरी ऑलमोस्ट सारी के सारी जो मेडिटेशन होती हैं, चलो काफी साल हो चुके हैं, बिना ऑडियो की होती है, मतलब बिना सीडी प्लेयर या बिना ऑडियो की होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कीजिए, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी कोशिश किया कीजिए कि बिना ऑडियो के भी कर पाए। अगर आपको स्टेप्स याद हैं तो बिना ऑडियो के भी करने की कोशिश किया कीजिए। उससे क्या होता है कि आपकी मेडिटेशन जो है वो मैकेनिकल नहीं बनती है, बिकॉज आपका हर स्टेप पे कंट्रोल है और अवेयरनेस है। और आई थिंक पर्सनली स्पीकिंग, आपका जितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन और अवेयरनेस साथ साथ में अगर आपकी चल रही है, तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता। या बहुत कम चांस है कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा, बिकॉज आप खुद मेडिटेशन कर रहे हो, आप कंप्लीटली उसमें इन्वॉल्व हो। ये बड़ा फर्क है, आपको देखना पड़ेगा कि अपनी प्रैक्टिस में कर करके इसको, तब जाके आपको प्रैक्टिस का वो मजा आने लगेगा कि कि खुशी मिल जाती है अंदर से कि आज कैसे नहीं की मतलब मेडिटेशन। इट्स नॉट एज, ठीक है, दो तरीके होते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि अपने कैरेक्टर बिल्डिंग करने की अपनी प्रैक्टिस करनी है। एक तरीका जो होता है वो होता है बाय डिसिप्लिन। सेकंड होता है बाय लव। मतलब आप अपने आप से इतना प्यार करते हो कि आप कैसे नहीं करोगे, मतलब ये वहां जाना है, क्योंकि इतना सुख मिलता है कि वहां कैसे नहीं जाओगे यार।
और सचमुच में बहुत बहुत ही ज्यादा सुख मिलता है। देयर इज दिस सेंस ऑफ एब्सोल्यूट इनर पीस एंड ब्यूटी, जो कि किसी किसी टाइम पे यू कैन, आई डोंट नो राइट नाउ, बट मे बी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी, रेडी टू अदर पीपल ऑल्सो। पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है, राइट? सो और ये एक डीप मेडिटेशन जो आप खुद करते हो, देखिए सीडी का पर्पस क्या होता है कि आपको एक रिदम में लेके आ जाना। उससे ज्यादा सीडी मुझे पता नहीं कितना काम कर सकता। हाँ, मास्टर जो कि ओम चैंटिंग आई एग्री कि बहुत ही पावरफुल है, दैट आई एग्री। वो मैं मानता हूँ, एंड आई रिकमेंड कि आप ओम चैंटिंग मास्टर की प्ले कर लिया कीजिए। बेसिकली सीडी जो है, आपको अगर पूरे तरह से स्टेप्स मालूम हो चुके हैं, देन कोशिश कीजिए अपने अपने हिसाब से भी कि अपने आप किया कीजिए उसको, ताकि और अपने वर्ड्स क्रिएट कीजिए, सिचुएशंस को उस तरीके से ब्लेस कीजिए जिससे किसी रिक्वायरमेंट है, इन्वॉल्व हो जाइए पूरे के पूरे प्रोसेस में। फिर आप देखेंगे कि मैं जो बता रहा हूँ अभी, एज अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस, आपको वो खुद अपनी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगे। देन आप इस पाथ पे सेल्फ रिलायंट बन जाओगे। ये सबसे बड़ा गोल होता है, कि मतलब आप अपने पाथ पे इंडिपेंडेंट हो जाए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि दैट यू डोंट नीड स्कूल, बट यू डोंट नीड अदर पीपल टू वैलिडेट फॉर यू कि ऐसा भी है आगे। यू कैन एक्सपीरियंस इट फॉर योरसेल्फ। वो कि सच क्या है, आप उसके जज खुद बनो, बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंसेस। ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आगे चलिए, लेट्स स्टार्ट। आज का जो है हमारा स्टडी है लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स का, एन अपॉइंटमेंट विद डेथ। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, काफी सारी चीजें हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, कि एक वो एक स्वामी था, वो क्या था, गॉड में नहीं मानता था, राइट? रिमेम्बर लास्ट टाइम हमने हमने पढ़ा था पूरा का पूरा चैप्टर उसका। फिर जब वो हिमालय पे 14,000 फीट पे गए तो ये हुआ, वो बहुत बहुत कुछ हुआ उसके बाद। तो ओ, इन्वोकेशन नहीं कहते हैं, क्या? लेट्स प्रे to the Supreme God, to the great divine Father and the great divine Mother. Thank you for your priceless blessings, for your divine light, divine love, divine power, divine healing, guidance, mercy, help, and protection. We thank you. To our spiritual teacher, great spiritual teacher, to all the great spiritual teachers, to all the great gods and goddesses, to all the great, great ones, we very, very humbly thank you for your great blessings. To the great Swami Rama, and to his great spiritual teacher, Bengali Baba, we thank you for your great blessings. Thank you for the teachings. Thank you, thank you, thank you. शुरुआत करते हैं, चलिए। An appointment with death. The first part of this story took place when I was 7 years old, and its conclusion when I was 28. When I was 7, several learned pundits and astrologers of Banaras were invited by one of my relatives to consider my future. Our country is famous for this science. You will find many charlatans. Charlatans are people, मतलब धोखाधड़ी जो करते हैं वो भी होते हैं, ठीक है? You will find many charlatans, and you will also find genuine astrological practitioners. If you decide to consult one before you arrive, he may write a description of your whole life, and on the front will be your name. It will be waiting for you when you arrive. If you have not told anyone, you're going to see him. Wow, really? Such an ability is rare. Of course, we haven't found anybody like this. You will find it at only 2 or 3 places, but it's quite genuine. I was standing just outside the door, overhearing what they said. They all said, "This boy is going to die at the age of 28." They even gave the exact day. I was so upset that I started sobbing. Then I thought, I have such a short span of time. I will die without accomplishing anything. How am I possibly going to complete the mission of my life? My master came up to me and inquired, "Why are you weeping?" "I'm going to die," I told him. He asked, "And who told you that?" I said, "All these people," and pointed to the astrologers gathered inside.
He took hold of my hand and said, "Come." He took me into the room and confronted the astrologers. "Do you really mean to say that this lad is going to die at the age of 28?" he asked. The unanimous response was yes. "Are you sure?" "Yes. He is going to die at that time and nobody has the power to prevent it." My master turned to me and said, "Do you know these astrologers will all die before you do? And you will live for a long time. Because I will give you my own ears. Today none of them is alive. They all died before I was 28 years old." They said, "How is such a thing possible?" My master replied, "Your prediction is wrong. There is something beyond astrology." Then he said to me, "Don't worry, but you will have to experience death face to face on that fateful day." During the intervening years, I forgot all about what had been predicted. When I was 28 years, I was asked by my guru to go to a mountain peak some 11,000 feet high and some 60 miles from Rishikesh, where for 9 days I performed a ritual Durga Puja, worship of the Divine Mother. I wore wooden sandals, a loin cloth, and a shawl. I carried a pot of water with me and nothing else. I used to go about freely in the mountains, chanting and reciting the hymns of the Mother Goddess. The mountains were my home. I had once climbed to a height of 20,000 feet, and I was confident that I could climb any mountain without special equipment. One day, I was singing as I walked all along beside a steep cliff, feeling like the Lord Himself in that solitude. Sound is there, right? One second, sound is there, right? Every one of you can hear it? Yes? No? Yes? Okay, all good. Let's go forward. Thank you. One day, I was singing as I walked all alone beside a steep cliff, feeling like the Lord Himself in that solitude. I was on my way to the top of the mountain, but there was a small temple to worship the Divine Mother. There were pine trees all around. Suddenly, I slipped on the pine needles and began to roll down the mountain. I thought that my life was finished. But as I plummeted downward after about 500 feet, I was caught by a small thorny bush. A sharp branch pierced me in the abdomen, and that held me. My God. There was a precipitous drop below, and the bush started swinging with my weight. First, I would see the mountains and then the Ganges far below. I closed my eyes. When I opened them again, I saw blood flowing where the branch pierced my abdomen. But that was nothing compared to the stark imminence of death. I paid no attention to the pain because of the larger concern, the anticipation of death. I repeated all the mantras I knew. I even repeated the Christian and the Buddhist mantras. I had been to many monasteries and had learned mantras from all faiths, but no mantra worked. See, this is amazing, no? No mantra worked. I remembered many deities. I said, "Oh, bright being, such and such, please help me." But no help was forthcoming. There was only one thing which I had not tested, my courage. When I started testing my courage, I suddenly remembered I am not going to die, for there is no death for my soul, and death for this body is inevitable but unimportant. I am eternal, so why am I afraid? I have been identifying myself with my body. What a poor fool I have been. I remained suspended on that bush for something like 20 minutes. Then I remembered something that my master had told me. He said, "Do not form this habit, but whenever you really need me and remember me, I will be there in one way or another." I thought, I have tested my courage. Now I think
I should also test my master. This is natural for a disciple all the time because he wants to test his master. He avoids facing his own weakness by looking for faults in his master. Because of the excessive bleeding, I began to feel dizzy. Everything became hazy and I began to lose consciousness. Then I heard some women on the path just above me. They had come to the mountains to collect grass and few roots for their animals. One of them looked down and saw me. She cried, "Look, a dead man." I thought, if they think I am dead, they will leave me like this. How could I communicate to them? My head was down and my feet were upward. They were a few hundred feet away. I couldn't speak, so I started waving my legs. They said, "No, no, he is not dead. His legs are still moving. He must be still alive." They were brave women and came down, tied a rope around my waist, and lifted me up. The stem was still inside me. I thought, this is surely a time for courage. I pressed my stomach in and I pulled the stem out of my abdomen. They pulled me up and took me to a small mountain path. They asked me if I could walk, and I said yes. At first, I didn't realize the severity of my condition, for the injury caused by the stem was mostly internal. They thought that since I was a Swami, I could take care of myself without their help. They told me to follow the path until I came to a village. And then they went on their way. I tried to walk, but after a few minutes, I fainted and fell. I thought of my master and said to him, "My life is over. You brought me up and did everything for me, but now I am dying without realization." Suddenly, my master appeared. I thought my mind was playing tricks on me. I said, "Are you really here? I thought you had left me." He said, "Why do you worry? Nothing is going to happen to you. Don't you remember that this is a time and date predicted for your death? You need to face death no more today. You're all right now." I gradually came to my senses. He brought some leaves, crushed them, and put them on the wound. He took me to a nearby cave and asked some people there to take care for me. He said, "Even death can be prevented." Then he went away. In 2 weeks' time, the wound was healed, but the scar is still on my body. In that experience, I found out how a genuine and selfless master helps his disciple even if he's far away. I realized that the relationship between master and disciple is the highest and the purest of all. It is indescribable. वाह भाई वाह, ये हुई ना बात. Powers of the mind. The mind is a reservoir for numerous powers. By utilizing the resources which are hidden within it, one can attain any height of success in the world. If the mind is trained, made one-pointed and inward, it also see इसमें बहुत चीजें लिखा है. If the mind is trained, made one-pointed and inward, इन तीनों का अलग अलग मतलब है. ट्रेंड का मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड और ट्रेनिंग अवेयरनेस में भी होती है, ट्रेनिंग कॉन्सेंट्रेशन में भी होती है, ट्रेनिंग जो होती है वो नॉन जजमेंटलिज्म में होती है, ट्रेनिंग जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड में. अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स होती है माइंड की, राइट. बेसिकली अलग अलग मेडिटेशन होते हैं, so अलग अलग माइंड की ट्रेनिंग्स भी होती हैं. ट्रेंड, मेड वन पॉइंटेड मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, एंड इनवर्ड. इनवर्ड का मतलब ये है, आप इसे कुछ इस तरीके से सोचिए कि समथिंग लाइक दिस, कि बाहर जो कुछ भी होता है लाइफ में, हमारी लाइफ में, वो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट कि हमारे चक्रास में किस किस तरह के
की एनर्जीज हैं, अगर हमारे चक्रास के अंदर जो एनर्जीज हैं वो एक्सीडेंट की हैं, इंजरी की हैं, ट्रॉमा की हैं, वगैरह वगैरह, तो लाइक एनर्जीज विल अट्रैक्ट लाइक एनर्जीज, मतलब उस तरह की सिचुएशन भी हमारे लाइफ में आएंगी और बिल्कुल वैसे ही आएंगी। तो इसका एक तरीका जो होता है इन सिचुएशन को चेंज करने का, वो होता है एफर्मेशंस करना। आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, आई एम अनडिफीटेबल, राइट? आपने गाना सुना है वो वाला, क्या नाम है? आई एम अनस्टॉपेबल, सिया का। आई एम पोर्शे विद नो ब्रेक्स, आई एम इनविंसिबल, आई विन एवरी सिंगल डे, राइट? अब वो पूरा का पूरा गाना एक्चुअली एफर्मेशन पे बेस्ड है। आपको पता है उस लेडी ने कितना गुड कर्मा कमाया होगा ये गाना बना के? मतलब आई एम जस्ट सेइंग, सिया का अनस्टॉपेबल जो है यूट्यूब पे भी अगर हम जाके एक बार देखेंगे ना, वो आई जस्ट वांट टू से कि उसके एक्चुअली व्यूज कितने हैं। सिया अनस्टॉपेबल, एक मिनट, टोटल व्यूज, और बाकियों पे सुना गया होगा तो अलग होगा, मतलब करके ना ऐसे। सो रफली 2 बिलियन व्यूज आई थिंक उसके, और समथिंग लाइक दैट, आई थिंक सो। अनस्टॉपेबल मतलब सब मिला के तकरीबन 1 बिलियन या 1.5 बिलियन व्यूज के ऊपर होगा, ठीक है? क्लियर? आप ये सोचिए कि जो है सिया, अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल बहुत फेमस सॉन्ग है। तो यूट्यूब में लाके बाकी लोगों ने अलग अलग वेबसाइट्स पर डाल डाल के, फिर वो मूवीज में से लेके स्पॉटिफाई वगैरह वगैरह सब मिला के 1 बिलियन या उसके ऊपर व्यूज होंगे, ठीक है? आराम से 1.5 बिलियन के ऊपर होगा। अब ये सोचिए कि ये सॉन्ग ने कितने लोगों को इमोशनली मोटिवेट और चार्ज किया होगा, और लोग रोज सुबह उठ के वो सॉन्ग सुनते होंगे, पक्की बात है। जो भी डिप्रेस्ड होंगे पक्का सुनते होंगे उसको। एंड द इंटायर गुड कर्मा कम्स टू द टीम जिन्होंने गाना बनाया वो वाला, और गाया जिसको, विच इज रिमार्केबल, विच इज फंडामेंटली रिमार्केबल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो फिल्म स्टार, मतलब फिल्म स्टार की बात नहीं कर रहा, ये इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि पब्लिक मतलब मीडिया में होते हैं, इनके गुड कर्मा इस तरीके से भी आते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा गाना था जॉश कॉर्बन का, वो था यू रेज मी अप, पक्का सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सब लोगों ने सुना होगा। यू रेज मी अप, वो एक टाइम पे इतना ज्यादा प्ले हुआ था, 1990s की बात है, कि उसको अमेरिका का नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर करने वाले थे, पता है? हर 10 मिनट में रेडियो पे वही वाला गाना प्ले हो रहा था। पूरा का पूरा साल ऐसा गया है, मतलब उसके पहले वाले सालों में भी, बट एक टाइम इतना ज्यादा प्ले हुआ था ये वाला सॉन्ग कि इस सॉन्ग को अमेरिका का नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर करते वो लोग। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये? क्योंकि दिस सॉन्ग uplifts you at levels which are which जो मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे काम करता है, बट these songs really charge you up। इसमें affirmation बहुत strong होते हैं, बहुत पावरफुल affirmation होते हैं। सो एनीवेज, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये वाली बात है, क्योंकि जो है जब आप इनवर्ड जाने की जब बात करते हैं, तो सिचुएशंस लाइफ में जहां भी होती हैं आपको ये दिखाई पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स लाई इनसाइड, एंड मोस्ट प्रॉब्लम आर ऑफ परसेप्शन एक्चुअली। क्यों? क्योंकि उसमें से एक रीजन ये है कि हमको सुख चाहिए अपनी लाइफ में, हमको दुख नहीं चाहिए। पर हम ये भूल जाते हैं कि सुख और दुख जो होते हैं वो एक्चुअली, इसी वक्त ना मुझे अपने टेबल पे एक कॉइन भी नहीं दिख रहा है, आमतौर पे तो पड़े रहते हैं। क्या दिन आ गए हैं। Anyways, चलिए, दो साइड्स हैं, इसको बोल देते हैं सुख है, ये वाला हो गया दुख, ठीक है? हमको सुख चाहिए, हमको दूसरा वाला साइड नहीं चाहिए। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये ये एक इतनी सिंपल सी और फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इसको समझने के लिए आपको कई जन्म लग जाएंगे अगर आपने अभी से देखना शुरू नहीं किया तो। ये पेयर में ही आते हैं हमेशा। आप कभी एक को चाह के दूसरे को नहीं चाहो, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहो कुछ भी, ठीक है, होता नहीं है ऐसा कभी भी।
हमेशा पेयर में आता है, इसीलिए आंसर जो है वो होता है नॉन ड्यूअल स्टेट। नॉन ड्यूअल, ड्युअलिटी से छुटकारा, न सुख चाहिए न दुख चाहिए, मतलब मुझे लाइफ के सुख दुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज नॉन ड्यूअल स्टेट। ये जो है, जिसने इसको रियलाइज कर लिया एक बार, डीप मेडिटेशन में ही हो पाता है और कभी नहीं हो पाता, कि आपको ये सुख और दुख जो है, सो कॉल्ड सुख दुख जो है, आपको उससे गहरी चीज मिल जाती है, उसको बोलते हैं जॉय। वो जॉय जो है लाइफ में ऑलमोस्ट हमेशा एक्टिव रहता है। आपका कोई भी सिचुएशन लाइफ में, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको उससे, लाइफ अच्छी चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है, वो जॉय एक रहता है जो हमेशा एक्टिव रहता है। और ये जाके जॉय, जॉय को आई थिंक हिंदी में बोलते हैं आनंद, बोलते हैं आनंद हिंदी में, हिंदी संस्कृत में बोलते हैं आनंद, वो हमेशा एक्टिव रहता है। वहां तक पहुंचना है, सोच के देखिए। फिर लाइफ में कुछ भी हो, आनंद हमेशा रहेगा, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, बिकॉज आपने अर्न कर लिया है अपनी प्रैक्टिस के द्वारा। मेक सेंस क्या? और ये आनंद जो आता है वो आपकी हायर सोल से आता है, या आपके हिंदी में क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद आनंद से आता है, मतलब उसका फीचर है एक्चुअली, तो आप वहां पे प्लग कर लेते हो एक्चुअली स्पीकिंग, राइट? सो इनवर्ड माइंड जो होता है वो अंदर प्रॉब्लम्स को ढूंढता है, उनको फिक्स करता है। एक तरीका मैंने आपको बताया कि वो प्रॉपर एफर्मेशन से है, राइट? दूसरा तरीका जो होता है वो होता है कि प्रॉब्लम्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना अपने अंदर, अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को ऑब्जर्व करना, अपने अंदर डिजायर और अटैचमेंट को ऑब्जर्व करना, बस सिर्फ ऑब्जर्व करना। और तब जब वो हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको सडनली भयंकर गुस्सा आ गया, ठीक है, या लस्ट आ गया, या डिजायर आ गई, या मतलब इरिटेशन हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम हो गई, अगर आप तत्क्षण, मतलब अगर आप उस पर बैठ के इफ यू ऑब्जर्व इट, तो मतलब काफी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उसके बाद आप उस पर कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने डिले कर दिया कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद करेंगे या शाम को करेंगे, तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट उसका भी होगा, बट उतना स्ट्रांग इफेक्ट नहीं हो पाएगा जितना कि उस समय होगा। उस समय करने का मतलब पता है क्या होता है? उस समय करने का मतलब है कि आप अपने आप को आग में जलता हुआ देख रहे हो लाइव, आपको दिख रहा है क्लियरली, जब आप एकदम अपने आप को पकड़ लोगे ऐसे, कि आप आग में एक्चुअली में जल रहे हो, अभी के अभी जल रहे हो, तो उसके बाद ना, जब एक बार अगर आदमी आग में हाथ डाल देता है, एकदम से खींचने के बाद दोबारा आग में हाथ नहीं डालेगा कभी भी, वो अवेयरनेस की वजह से। अगर आप वही वही फंडामेंटल, अगर आपकी अवेयरनेस जितनी ज्यादा पॉसिबल, अगर आपकी अवेयरनेस उस मोमेंट पे डेवलप होगी जबकि आप कुछ कर रहे हो, बिल्कुल हीट 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 मोमेंट पे, उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा आपके ऊपर, उसका टू गुड डिग्री। और ये ना इम्प्लीमेंट करने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी पावर क्या है। लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आज तक समझ में आई है, और मैं बहुत लोगों को ये बताता भी हूँ जब मैं पर्सनली, मतलब उनसे बात करता हूँ, कि लोग जो है क्रिटिसिज्म करते हैं, एंगर करते हैं, एडिक्शंस करते हैं, ये वो सब कुछ करते हैं, बस उस टाइम पे जब वो कर रहे हो तो उनकी अवेयरनेस मिनिमल होती है, वो फुल अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व ही नहीं करते उसको, इसलिए उसकी इसकी पावर रहती है, क्योंकि फुल्ली वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाया अभी तक। सोल जब उस चीज को प्रॉपरली एक्सपीरियंस कर लेगी, उसके बाद उस चीज की पावर खत्म हो जाएगी। ये आ, शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर समझने की कोशिश कीजिएगा एंड उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है? जैसे कि एक मित्र थे, मित्र भी नहीं बोलना चाहिए, अब तो पता नहीं, काफी साल हो गए, तो पता भी नहीं कौन है। उन पे हमने अलग अलग चीजें मतलब ट्राई की थी, उनको ना, उनको ही लव्ड सेक्स अलॉट, उनको मतलब लस्ट का बहुत वो था, स्किन का लस्ट, मतलब है ना, ऑपोजिट जेंडर का। तो अम, उन पे मैं साइकोथेरेपी भी मतलब काफी की थी वगैरह, काफी कम हो गया था उससे। बट एक टाइम आया था जबकि मैंने उन एक तरीके से, मतलब ये कहना चाहिए कि आप व्हेन यू आर कंप्लीटली अराउज्ड एंड व्हेन यू कांट थिंक, उस टाइम पे अवेयरनेस को लिखाएगा कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस वक्त, बस उतना। एंड अपनी पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व कीजिएगा उस टाइम के लिए, फील कीजिए लस्ट, पर फुल्ली अवेयर है कि हाँ ये लस्ट है जिसने मेरे मन को जकड़ के रखा है।
अवेयरनेस ऑफ दिस। अब मतलब इस मुझे नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ था इसके ऊपर, क्योंकि मैंने उतना लंबा टाइम में टच में था भी नहीं उनसे उसके बाद तो। बट कभी उसके बाद मुझे ये सुनने के लिए नहीं मिला था कि हाँ प्रॉब्लम हद से ज्यादा बाहर हो गई है, या फिर मतलब मुझे हीलिंग चाहिए। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट काफी स्ट्रांग हुआ होगा इस वजह से। मैंने एक्चुअली अपने आप को भी मतलब कई कई बार पकड़ा है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि मुझे लगता है कि लोग मुझे अटैक करना है, मतलब ना जब बोलते हैं कि पर तुमने ऐसा क्यों किया, एंड मैंने नॉर्मल चीज के लिए किया होगा, ठीक है। पर जब जिस व्यक्ति से आप मतलब जो है मतलब उम्मीद रखते हो कि अच्छे से बात करेगा, जब वो सामने वाला बंदा आपसे ऐसे करके बात करता है तो यू फील अटैक्ड। एंड उस टाइम पे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म आता है। तो अ, मुझे किसी ने बताया था कि अगली बार जब वो होगा तो याद रखना कि तुम्हारी टोन टोन उस टाइम पे चेंज हो जाती है। यू गो इन टू अ टोन जहाँ पे कि यू आर सेइंग प्लीज डोंट अटैक मी वाली टोन हो जाती है। एंड लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ तो मैंने एकदम उस टाइम में, हाँ यार बात तो सही है, मेरी टोन उस टाइम पे चेंज हो जाती है एकदम। एंड सो आई वाज लाइक ओके, जस्ट अ मिनट, एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट कि हाँ यार बात सही है एक्चुअली ऐसा। आई वाज ट्राइंग टू बी अवेयर, बट उस टाइम पे उतना उतना टाइम था नहीं। बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्कड एंड वाज फिनोमिनल बाय द वे। हाँ, मैं आप लोगों को भी एग्जैक्टली सेम चीज रिकमेंड करूंगा कि जब आप लोग किसी भी सिचुएशन में हो जहाँ पे कि इस तरह की डिफिकल्ट कंडीशंस हो रही हो, practice awareness, beautiful awareness of the wise। काफी हद तक उसका हुक जो है आपके सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। आगे चलते हैं। पावर्स ऑफ द माइंड। इसमें लगा कि इफ द माइंड इज ट्रेन्ड, made one pointed and inward, it also has the power to penetrate into the deeper levels of our being. It is the finest instrument that a human being can have. Wow. Lessons of on the sand. If you look at someone with full attention by focusing your conscious mind, it can immediately influence him. A Swami taught me this when I was young. His name was Chakravarti. He was one of the most eminent mathematicians of India and the author of the book Chakravarti's Mathematics. Later, he renounced the world to become a Swami. He was a student of my master. He contended that gaze or trataka is a very powerful tool for influencing anything external and in strengthening concentration. When the mind is focused externally on some object, it is called gaze. When the mind is focused internally, it is called concentration. आप लोगों में से कुछ लोगों को तो पता होगा ये वाली बात कि जब भी मेडिटेशन हम करते हैं, सोल मेडिटेशन या कोई भी मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे स्पिरिचुअल टीचर बोलते हैं कि ओके फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स, उसमें एक होती है फ्लेम। आप लोग को पता है या कितने लोग को नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्लेम। फ्लेम मतलब अब हमारे स्पिरिचुअल टीचर एक किसी मेडिटेशन में बोलते हैं, उसको सोल मेडिटेशन बोलते हैं, कि बी अवेयर ऑफ अ फ्लेम while focusing on this 2 3 things, also focus on a flame। अब उसमें ये होता है कि बहुत लोग स्टार्टिंग में एक इमेजिन करके फिर भूल जाते हैं उसको, और ऐसे काम नहीं होगा, नहीं होगा ऐसे काम, हो नहीं सकता। फ्लेम का जो रोल है वो बिना मतलब उसका जो एक स्टेप अप जो रोल है उसके बिना आगे पॉसिबल नहीं जा पाना। ये आई होप मुझे पहले कोई बता देता एक्चुअली। मैंने बहुत लंबे समय के बाद सीखा है कि फ्लेम का जो रोल है वो और कोई पूरा नहीं कर सकता। फ्लेम का एक रोल है एक्चुअली सोल मेडिटेशन में, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। आप ये कर सकते कि आप अगले 3 4 साल लगाइए और उस विजुअलाइजेशन को परफेक्ट कीजिए। फ्लेम का जो पर्पस है, जो रोल है, वो और कोई पूरा पूरा नहीं कर सकता। वो आपको फ्लेम के द्वारा ही पूरा करना पड़ेगा, और खाली वो माइंड के एंकरिंग के लिए नहीं, उसका कोई और पर्पस एक्चुअली। तो आई होप कि ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसको यूज करेंगे अपनी लाइफ में, उसको अपनी मेडिटेशन टेक्निक्स को और बेहतर बनाएंगे विद टाइम। ठीक है।
इस तरीके से जो है इनवर्ड कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे थे कि when it's focused internally, it is called concentration. The power of a focused mind is immense. There are various methods of gazing, each of which gives a different power to the human mind. One may gaze at the space between the two eyebrows, the bridge between the two nostrils, a candlelight in a dark room, the early morning sun, or the moon, but certain precautions must be observed, or one can injure himself both physically and mentally. Thought power is known all over the world. A one pointed mind can do wonders, but when we direct it towards worldly gains, we are caught in the whirlpool of selfish desires. Many on the path become victims of temptations of acquiring siddhis, powers, forgetting their real goal of attaining serenity, tranquility, and self realization. One day, the Swami said to me, "Today I am going to show you something. Go to the court and find a person who is being persecuted unjustly." So I asked one of the lawyers, "Can you tell me of anyone who is being tried unjustly in this court?" He said, "Yes, I have such a case." I went back. I said, "Swamiji, okay, this man will be acquitted." Sorry, I went back and Swamiji said, "Okay, this man will be acquitted." Acquitted का मतलब है इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा. This man will be acquitted, and I will now tell you word for word the judgment that will be handed down. He dictated the judgment to me, although he was not a lawyer. He said, "I have made three mistakes purposefully. The judgment will be exactly like my dictation, and it will also have these three mistakes." I typed his dictation. When the judgment was later handed down, every word, comma, and period was exactly the same as what had been dictated to me. He said, "Compare my dictation with the judgment, and you will find that the same two commas and one period are missing." The dictation perfectly matched the judgment. मतलब उन्होंने इस तरह से डिक्टेशन किया था कि जो है उसमें उन्होंने जबरदस्ती दो या तीन एरर्स को डाला था ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ ये एरर वाला ही जजमेंट जो है वो जज दे रहा है, ताकि मतलब मैं जो बता रहा हूँ उसको मैं प्रूव कर सकूं. फिल्म का मीनिंग आपको सोल बुक में पढ़ के प्लस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा. मैं चाहूँगा कि आप मेडिटेशन पे टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आपको उसका डीपर मीनिंग मालूम हो जाए. सो I said, "Swamiji, you can change the course of the world." He said, "I don't claim to do that. That is not my purpose. I am demonstrating this so that you can understand how a man can influence the mind of another from any part of the world if it is for a good reason." See, for a good reason. Helping others is possible from a distance. I asked him to give me the secret of his power. He said, "I will give you the secret, but you won't want to practice it." I did the method for some time, and it helped me. But later I discontinued it because it was distracting and time consuming. The Swami was very kind and also taught me philosophy through mathematics. Every digit was explained in with verses from the Upanishads from 0 to 100. He explained the philosophical meaning of the science of mathematics. Mathematics has all the digits. 1. Mathematics has the digit 1. All other digits are multiples of the same 1. Similarly, there is only one absolute reality, and all the names and forms of the universe are multiple manifestations of that one. Drawing lines on the sand of the Ganges with his staff, he made a triangle and taught me how life should be an equilateral triangle. The angle of the body, the angle of the internal states, and the angle of the external world make up the equilateral triangle of life. Body, internal states, and external world.
equal triangle of the equilateral triangle. All the numbers are the outcome of a point which cannot be measured. Similarly, this whole universe has come out of an unmeasurable void. Life is like a wheel, which he compared with a circle or zero. Life is like a wheel, wow, which he compared with circle or zero. This circle is an expansion of the point. He used another analogy. There are 2 points called death and birth, and life here is a line between the two. The unknown part of life is an infinite line. My repulsion towards the study of mathematics was dispelled. After that, I began studying mathematics with considerable interest. I learned that mathematics is a positive science, which is the very basis of all the sciences, but it is itself based on the exact science of Sankhya philosophy. Sankhya philosophy, by the way, is also very similar to Kabbalistic. Last time हमने पढ़ा था ना? Is the most ancient philosophy for knowing the body, its components, and various functions of the mind. Yoga is a practical science which leads one to the superconscious state. Through understanding Sankhya, all philosophical questions arising in my mind were solved easily, and then I understood the scriptures properly. The last day of his teaching was enchanting. He said, now make a zero first and then put one afterwards. 0, 1. Every zero has value if the one is put first, but zero has no value if one is not put first. All the things of the world are like zeros, and without being conscious of the reality, they have no value at all. When we remember the one reality, then life becomes worthwhile. Otherwise, it is burdensome. Wow, this is fantastic. The Swami left for the deep Himalayas, and I never met him again. I'm grateful to those teachers who spent their valuable time in teaching me. Wow, this is cool, man. I don't know if we can finish this next section also. Let's go. That's okay. In 1942, I started on a journey to Badrinath. पहले मैं इसका एक बार आपको मतलब समझा देता हूँ. इसका मतलब है कि उन्होंने बोला कि एक जीरो लिखो और एक वन लिखो. ठीक है, जीरो और वन लिखो. फिर बोला कि जीरो और वन की वैल्यू वन ही है, तो जीरो का कोई मतलब नहीं है. जैसे कि जीरो को अगर वन के पहले लगाया जाएगा तो बाद में लगाया जाएगा, तब जीरो की वैल्यू है. वो इस होल थिंग में वैल्यू ऐड करता है. He was basically saying कि वन का मतलब सुप्रीम गॉड एंड सो एंड सो एंड सो. He says कि zero is like worldly achievements, right? As an example, he was saying कि आप जितने भी जीरो लगा दो वन के पहले, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनलेस अनटिल उसके पहले वन लगा हो. तो ही वाज सेइंग कि सोल के लिए मटेरियल गेन्स या वेल्थ की कोई वैल्यू नहीं होती है अनलेस अनटिल उसमें कॉन्शियस रियलिटी, आप फुल कॉन्शियस रियलिटी आपने अटेन कर ली हो, तब उनकी वैल्यू होती है. वो जो सोल की, वो उससे कुछ कर सकता है एक्चुअली. वरना सोल आई गई, कुछ पता नहीं चला, कोई मतलब नहीं होगा उसका. See, all the things of the world are like the zeros, and without being conscious of the one reality, they have no value at all. Okay, transmutation of matter. ये सिद्धि जो होती है ट्रांसमिटेशन की, ये एक एडवांस्ड सिद्धि होती है जो कि चलिए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा. In 1942, I started on a journey to Badrinath, the famous Himalayan shrine. On the way, there is a place called Srinagar, which is situated on the bank of Ganges. 5 miles from Srinagar, there is a small Shakti temple. Just 2 miles below that was the cave of Aghori Baba. Aghor is a very mysterious study which is rarely mentioned in books and hardly understood even by the yogis and swamis of India. It is an esoteric path involving solar science and is used for healing. This science is devoted to understanding and mastering the finer forces of life, finer than prana. It creates
a bridge between life here and thereafter. There are very few yogis who practice the Aghori science, and those who do are shunned by most people because of their strange ways. The villagers in the area around Srinagar were very much afraid of the Aghori Baba. They never went near him because whenever anyone had approached him in the past, he called them names and threw pebbles at them. He was about 6 feet 5 inches tall and very strongly built. He was about 75 years of age. He had long hair and a beard and wore a loin cloth made of jute. He had nothing in his cave except a few pieces of gunny sack. I went to see him, thinking that I would pass the night there and learn something from him. I asked a local Pandit to show me the way. The Pandit said, "This Aghori is no sage, he is dirty. You don't want to see him." But the Pandit knew much about my master and me, and I persuaded him to take me to the Baba's cave. We arrived in the evening just before dark. We found the Aghori sitting on the rock between the Ganges and his cave. He asked us to sit beside him, and then he confronted the Pandit, saying, "Behind my back, you call me names, and yet you greet me with folded hands." The Pandit wanted to leave, but the Aghori said, "No, go to the river and fetch me a pot of water." When the frightened Pandit came back with the water, the Aghori handed him a cleaver and said, "There is a dead body which is floating in the river. Pull it ashore. Chop off the thigh and calf muscles and bring a few pounds of flesh to me." The Aghori's demand shook the Pandit. He became very nervous, and so did I. He was extremely frightened and did not want to carry out the Aghori's wishes. But the Aghori became fierce and shouted at him, saying, "Either you will bring the flesh from that dead body, or I will chop you and take your flesh. Which do you prefer?" The poor Pandit, out of deep anxiety and fear, went to the dead body and started cutting it up. He was so upset that he also accidentally cut the first and the second fingers of his left hand, and they started bleeding profusely. He brought the flesh to the Baba. Neither the Pandit nor I were in our normal senses. When the Pandit came near, the Aghori touched the cuts on his fingers and they were healed instantly. There was not even a scar. The Aghori ordered him to put the pieces of flesh into an earthen pot, to put the pot on fire, and to cover the lid with a stone. He said, "Don't you know this young Swami is hungry and you also have to eat?" We both said, "Sir, we are vegetarians." The Baba was irritated by this and said to me, "Do you think I eat meat? Do you agree with the people he hear that I'm dirty? I too am pure vegetarian." After 10 minutes had passed, he told the Pandit to bring him the earthen pot. He gathered a few large leaves and said, "Spread these on the ground to serve the food on." The Pandit with trembling hands did so. Then the Aghori went inside the cave to fetch 3 earthen bowls. While he was gone, the Pandit whispered to me, "I don't think I will live through this. This is against everything I have learned and practiced all my life. I should commit suicide. What have you done to me? Why did you bring me here?" I said, "Be quiet. We cannot escape. So let us at least see what happens." The Aghori ordered the Pandit to serve the food. When the Pandit took the lid off the pot and began filling my bowl, we were astonished to find a sweet called rasgulla, which is made from cheese and sugar. This was my favorite dish, and I had been thinking of it as I was walking to the Baba's cave. I thought it was all very strange. The Aghori said, "This sweet has no meat in it." I ate the sweet, and the Pandit had to eat it too. It was very delicious. What was left over was given to the Pandit to distribute among the villagers. This was done to prove that we had not been fooled by means of a hypnotic technique. All alone in the darkness, the Pandit left for the village, which was 3 miles away from the cave. I preferred to stay with the Agori to solve the mystery of how the food was transformed and to understand the bewildering way of living.
Why was the flesh of a dead body cooked? And how could it turn into sweets? Why does he live here all alone? I wondered. I had heard about such people, but this was my first chance to meet one in person. After I meditated for 2 hours, we began talking about the scriptures. He was extraordinarily intelligent and well read. His Sanskrit, however, was so terse and tough that each time he spoke, it took a few minutes to decipher what he was saying before I could answer him. He was no doubt a very learned man, but his way was different from other sadhu that I had ever met. Aghor is a path which has been described in the Atharva Veda, but in none of the scriptures I have ever read that human flesh should be eaten. I asked him, "Why do you live like this, eating the flesh of dead bodies?" He replied, "Why do you call it a dead body? It's no longer human. It's just matter that is not being used. You're associating it with human beings. No one else will use that body, so I will. I'm a scientist doing experiments, trying to discover the underlying principles of matter and energy. I'm changing one form of matter to another form of matter. My teacher is Mother Nature. She makes many forms, and I'm only following her law to change the forms around. I did this for that Pandit so that he would warn others to stay away. This is my 13th year in this cave, and no one has visited me. People are afraid of me because of my appearance. They think I'm dirty and that I live on flesh and dead bodies. I throw pebbles, but I never hit anybody. His external behavior was very crude, but he told me that he was behaving that way knowingly so that no one would disturb him as he studied and so that he would not become dependent on the villagers for food and other necessities. He was not imbalanced, but to avoid people, he behaved as though he were his way of living was totally self dependent. And although he continued to live in that cave for 21 years, no villager ever visited him, which means he's 8 more years, no? We stayed up through the night and he instructed me, talking the entire time about his Aghor path. This path was not for me, but I was curious to know why he lived such a lifestyle and did all that he was doing. He had the power to transform matter into different forms, like changing a rock into a sugar cube. One after another, the next morning, he did many such things. He told me to touch the sand, and the grains of sand turn into almonds and cashews. Wow, that's fancy, man. I had heard of this science before and knew its basic principles, but I had hardly believed such stories. I did not explore this field, but am fully acquainted with the governing laws of this science. At noon, the Aghori insisted that I eat something before leaving. This time, he took out a different sweet from the earthen jar. He was very gentle with me, all the time discussing the Tantra scriptures. He said, "This science is dying. Learned people do not want to practice it, so there will be a time when this knowledge will be forgotten." I asked, "What is the use of doing all this?" He said, "What do you mean by use? This is a science, and as a scientist of this knowledge should use it for healing purposes and should tell other scientists that matter can be changed into energy and energy into matter. The law that governs matter and energy is one and the same. Beneath all names and forms, there lies one unifying principle which is still not known in its entirety by modern scientists. Vedanta and ancient science describes this underlying principle of life. There is only one force, and all the forms and names in this universe are but varieties of that one. It is not difficult to understand the relationship between two forms of matter because the source is one and the same. When water becomes solid, it's called ice. When it starts evaporating, it's called vapor. Young children do not know that these three are forms of the same matter, that and that essentially there is no difference in their composition.
The difference is only in the form it takes. The scientists today are like children. They do not realize the unity behind all matter, nor the principles for changing it from one form to another. Intellectually, I agreed with him, and yet I did not approve of his way of living. I said goodbye and promised to visit him again, but I never have. I was curious about the fate of the Pandit who had gone to his village the previous night in a state of fear, so I went to see him. To my surprise, he was completely changed and was thinking of following the Aghori and becoming his disciple. Good stories, no? Amazing stories. My God, the kind of stuff. Wow. What's your closing prayer? To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, thank you for your great blessings. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. To our great spiritual teacher, to all the great spiritual teachers, to all the great gods and goddesses, to all the great, great ones, we very, very humbly thank you for your great blessings. Thank you. By the way, this also ties up with the first question we asked in the morning. Ki, why do you think there are different meditation techniques, right? Each has its own purpose. The one that we saw right now is a different purpose. Tartaka is a different purpose. Different kind of Tartakas have different kind of purposes. This is stuff and stuff and stuff and just so much stuff in there. Take care. See you. Bye bye. Have fun.